Hello students, how are you all? Welcome back again in the 6th lecture of standard 6th of science subject. So in the 5th chapter we had solved the exercise of chapter number 11, and after that we had continued in this chapter number 12, fun with magnets. We had discussed what are the poles, what are the force of attraction, repulsion, like poles, unlike poles, that we had completed in the 4th lecture. So here the remaining part of this chapter that I am discussing here, that we will complete here now. So chapter number 12 में जितना भी remaining portion अब बाकी है, so it will be clear now. Now when we will meet again, so we will solve the exercise of chapter number 12. So here another topic given in your textbook, and it is finding a direction using a magnet. So is it really possible to find the direction by use of magnet? मैग्नेट की मदद से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. Is it possible? And how it works, how it is possible? Suppose unknown place पे आपको ले जाकर वहाँ पे आपको छोड़ दूँ and direction find करने के लिए बोलूँ, in which direction you are now located? So what do you think? What do you take the actions against to find the direction of your position? So using a magnet, डायरेक्शन इज ऑल्सो फाइंड. डायरेक्शन फाइंड होता है. कैसे होता है? इफ़ यू स्टडीड इन द एसएस इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, फर्स्टली कालीकट बंदर पे जब वो आया था वास्को द गामा वॉज फर्स्टली केम एट द कालीकट पोर्ट, एंड एट दैट प्लेस directly he was not found the direction of India. So he was found the directions by the use of such appliances, these devices, exactly because he came through the way of water. So there is no direction. कहाँ पे जाना है किसको पता है? water तो सब जगह spread है. In which direction India is available? How it was found? So directions can be easily found by the using of magnets. How it works? So a freely suspended ends of magnet, suppose this is magnet and इसको यहाँ पे मैं अगर पकड़ के रखूँ, freely suspended magnet ends, जो मैग्नेट के दो एंड्स हैं, सपोज दिस इज मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दैट आई डोंट नो विच वन इज साउथ, विच वन इज नॉर्थ, बिकॉज ऑन द मैग्नेट इट इज नॉट रिटन दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. सो व्हेन आई केप्ट इट हियर एट अ फ्री एंड्स, so the north end will points towards the north direction. So ऐसे सपोज ये नॉर्थ एंड हुआ, ये साउथ हुआ, सो नॉर्थ एंड अगर नॉर्थ डायरेक्शन इधर है, सो ये मूव करके उधर चला जाएगा. सो ऑलवेज नॉर्थ एंड्स मूव्स और पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, while the south end moves towards the south direction. So this is the basic and very important characteristic of magnet, and by using this we will find the direction of any particular object. फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट को ऐसे पकड़ो, नॉर्थ एंड जिस डायरेक्शन में अगर वहाँ पे पॉइंट हुआ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, एंड साउथ जिस डायरेक्शन में पॉइंट हुआ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साउथ. सो फ्रीली सस्पेंडेड एंड्स ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेट. फ्रीली सस्पेंडेड एंड्स, आपको पकड़ के नहीं रखना है मैग्नेट को यहाँ पे बाइंड कर दो, बांध दो, एंड बांधने के बाद उसको सस्पेंड करो, सिर्फ उसको फ्रीली ऐसे पकड़ के रखो.
So freely suspended ends always points towards the north and south direction. So north pole towards the north direction, while the south pole towards the south direction. North pole always stands in a north direction and south pole always stands in a south direction. That I told you. नॉर्थ एंड जो होगा किसी भी मैग्नेट का, किसी भी बार मैग्नेट का, इट विल स्टैंड्स इन अ नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ जो होगा इट विल स्टैंड्स इन अ साउथ डायरेक्शंस. सो दिस इज द मेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट. इन अ अर्लियर टाइम when the compass was not discovered, when any direction measurement device is not discovered, in earlier time travelers can be find the direction by this method. जो ट्रैवलर्स थे, जो आते थे बाहर से, उनको डायरेक्शन अगर फाइंड करना है, सो ट्रैवलर्स कैन बी फाइंड द डायरेक्शन बाय दिस मेथड, बाय यूजिंग दिस मेथड. ट्रैवलर्स जो होते थे वो अपना डायरेक्शन इसकी वजह से वो फाइंड करते थे. एंड आफ्टर दैट कंपास वॉज डिस्कवर्ड. आफ्टर दैट धीमे 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 सब न्यू टेक्नोलॉजीज आती गई. आफ्टर द रिकवरी, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजीज, सो डायरेक्शन फाइंडिंग डिवाइसेस भी वहाँ पे डिस्कवर्ड हुई. So compass that was earlier discovered, after that at this current time digital devices are also available. Just in wristwatch, in your wristwatch, high qualified of wristwatch, you can find your direction, in which direction you stands. So this is the after the development of a new technologies, this will be again and again simplified or developed, we can say. So compass then after developed and it is widely used to find the directions. सबसे ज़्यादा यूज होता था. In a compass we know that there is a needle. There is a needle. In a compass there is a needle. Suppose this is the compass, so inside this is needle and it is magnetic needle. It always deflects. It is this needle is magnetic needle. It always deflects. So magnetic needle can attract in that direction. So when you kept out the compass, so जैसे ही मूवीज़ में अगर आपने देखा हो साउथ और इन फॉरेन हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर अगर आपने देखा हो, सो वहाँ पे जो होता है कंपास बाहर निकालते हैं एंड केप्ट इट हियर. सो द एंड्स ऑफ दिस नीडल केप्ट्स इन अ साउथ डायरेक्शन, साउथ पोल केप्ट्स इन अ साउथ डायरेक्शन, वाइल द नॉर्थ पोल केप्ट्स इन अ नॉर्थ डायरेक्शन. सो साउथ जो होगा साउथ के डायरेक्शन में स्टैंड करेगा एंड नॉर्थ जो होगा वो नॉर्थ की डायरेक्शन में स्टैंड करेगा. So by the using of this instrument compass, we can easily find out the directions. Now the another important topic is making a magnet. So is it possible to make a magnet? We can make it our home? Yes. But this is not a natural magnet and this does not have any type of a permanent magnetability. So here by rubbing, if you observed in a screwdriver, the screwdriver end has a magnet, it acts as a magnet. How it made? By the rubbing process, take a magnet and take a screwdriver whose end is not a magnet. So rub it till 5 to 10 minutes. Just only rub it. And when you rub and kept it in place on the screw, kept it on the screw, so you will find that screw gets attracted by the screwdriver. So what occurs in that case? So by the rubbing process, अगर आपने देखा हो, so by the rubbing process, this is your screwdriver.
this is your screwdriver. The molecules of screwdriver gets permanently magnetability. जो एंड्स जो होंगे वो क्या करते हैं, वहाँ पे परमानेंटली उनके पास मैग्नेटेबिलिटी आ जाता है. बट इट इज़ नॉट फॉर लार्ज ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ये थोड़े समय के लिए ही आएगा. आफ्टर 2 hours 3 hours 4 hours अगेन इट लूजेस इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक. So by the rubbing process we can make the magnet, but it is temporary magnets. These are the temporary magnets. This is not permanent magnet. Permanent magnet cannot lose its magnetic characteristic. It loses after a long duration of time, while the temporary magnet it loses its characteristic. So this is temporary magnet. Another example of man-made magnet is electromagnet. What are the electromagnets? So electromagnets are the magnets in which when the electricity is passes, so when electricity is passes, then it acts as a magnet. So these are the electromagnets. For example, this is horseshoe. This is horseshoe magnet. Wrap here a wire, a copper wire, and connect it both the ends with electrical sources, positive and here negative. So after certain times when you kept out this magnet, this horseshoe magnet, when you pass the electricity this coil, so we know that it attracts the iron type of material. So this is electromagnet. इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. नाउ the one remaining topic of this chapter that we are discussing here, so it is the how we keep a magnet and uses of magnet. What are the uses of magnet, that we will discuss here. So now let's look. Now the care of magnets. So how magnets is cured? What about the cares taken by the receivers अगेंस्ट दी मैग्नेट? सो मैग्नेट को अगर रखना है तो उसकी टेम्पररी जो है मैग्नेटेबिलिटी जो होती है वो ख़त्म ना हो जाए, सो उसके लिए हमें क्या करना है? सो केयर ऑफ मैग्नेट्स. सो मैग्नेट लूजेस इट्स प्रॉपर्टी और इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन इट इज़ हीटेड स्ट्रांगली. अगर उसको हीट करते रहो कंटिन्यूसली, व्हेन इट इज़ हीटेड स्ट्रांगली, सो इट लूजेस इट्स प्रॉपर्टीज. Dropped from a height. So when you drop a magnet at a such height, at a very big height, so due to the friction forces or other reasons, magnetic characteristics from the magnets it will be removed out. When you hit it with hammer, so magnetic characteristics also be removed out or not stored properly. So these are the reasons by which magnet can loses its property. मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी क्यों लूज करता है? These are the reason. Heated strongly, dropped from a height, hit with a hammer or not stored properly. These are the reasons to lose the magnetic characteristic or magnetic properties of a magnet. So it is kept there unlike. So how it is kept? उसको रखा कैसे जाता है? It is kept there unlike poles on the same side. सेम साइड पे unlike poles, positive negative, that's why it gets stick to each other. So it is kept there unlike poles on the same side. So suppose this is two magnet, this is north south, I want to kept it, so I will kept here. This is north south of first magnet and this is north south of second magnet, and between these two magnets I will put the small piece of wood.
So same side of wood and with wood between them, उसके बीच में क्या करते हैं, दिस इज द वुड, शीट ऑफ वुड को प्लेस कर देंगे, सो दोनों मैग्नेट एज इट इज अवेलेबल रहेंगे. सो अ पेयर ऑफ सॉफ्ट आयरन पीसेस कॉल्ड कीपर्स which keeps the magnet. This is placed in place of wood. You can place here iron pieces. You also soft iron pieces called keepers is also usually placed across its ends. So इसकी जगह आप सॉफ्ट मैग्नेट को भी आप वहाँ पे सॉफ्ट आयरन के पीस को भी आप पुट कर सकते हो. Now what are the uses of magnet? What are the uses of magnets? So magnet is used in hard disk that we are using in our computer, audio and video cassettes. So audio and video cassettes जो रन करते हैं उसमें magnets यूज होते हैं. It is used in ATM cards. So when we stick it in ATM, जब हम उसको ATM के अंदर डालते हैं, so it has magnetic chip जो ब्लैक कलर का पोर्शन होता है. सो इट इज़ यूज्ड इन ATM कार्ड्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक अकाउंट होल्डर. जो बैंक के अकाउंट का होल्डर होता है उसमें उसकी मैसेज कीप करने के लिए ये यूज़ होता है. नाउ थर्ड यूजेस ऑफ मैग्नेट एंड इट इज़ यूज्ड इन अ टेलीविजन्स, डोरबेल्स. Doorbells looks like in this shape. Look here, this is the स्टील, वी कैन से दिस इज़ द स्टील का वो जो होता है पोर्शन, यहाँ पे बेल लगा रहता है. एंड इट इज़ कनेक्टेड विथ मैग्नेट. सो यहाँ से जैसे ही करंट जाएगा ये इस पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है. सो दिस इज़ द डोरबेल. इट इज़ यूज्ड इन अ डोरबेल्स, टेलीफोन्स. In telephones magnets are used. And last use of these magnets are, it is used to lift large objects in a, अगर आपने मूवीज़ में देखा हो सो पूरे कार को उठा लेते हैं, ऐसे ऐसे मैग्नेट्स अवेलेबल होते हैं. सो इट इज़ वाइडली यूज्ड टू लिफ्ट द लार्ज ऑब्जेक्ट्स. Or it is also used to keep up small pieces of iron, etc. So for example, I mix the iron pieces and another impurities like a sand. So I want to kept out the iron pieces from the mixture. So magnet is used. When we kept the magnet on the surface of that mixture, iron is released out. Iron is removed out, we can say. So these are the care of magnet and uses of magnets. So this chapter is over to you. In the next lecture we will solve the exercise of chapter number 12. So this is over to you. Thank you.